Good evening, friends. Today we are going to discuss National Security Council, structure and functions of National Security Council and its role. In my previous lecture, I discussed national security, what, how, and why of national security. I also discussed in detail the scope of national security in contemporary times. If you recall, we had a discussion on constituents of national security in contemporary times. It is not only about national security is not only about physical security of your territories. It is also about environmental security, cyber security, then human security, social security, cultural security, financial security. Not many things are there. Food security. So many things are there. So national security in contemporary times is a very complex issue. Obviously, in different parts of the world, wherever you see that there is a progressive government, a proactive government, you'll find that every government has established some kind of institutional means and mechanism are dedicated to the cause of national security, to work on national security. Is there any kind of threat to national security? If there is a threat, what is the nature of that? Again, then what are the possible courses of action based on the availability of resources? What is available to us? Analysis, observation, then formation of different courses of action, designing the different courses of action, then choosing the best one in the given situation and working constantly on the same, because challenges to national security will keep rising in new form and new ways, as we as a society, we keep developing. So as we are evolving as a society, as a community, as a nation, new challenges keep coming. So it means overall, the you can say the spectrum of security is not a kind of static zone that you have army, navy, air force, border security force, and you have best of weapons, means and mechanism to. It's not only about physical security. Lot many things are there. So we need to work on different fronts at one go. So national security is a very serious matter. Very serious matter. In fact, development and security, they are integrally connected to each other. Development and security. You cannot think of development on sustained basis in any country unless the government, their society, they have been successful in achieving internal and external security. Lastly, you cannot say that here foolproof security mechanism is not like that. But to a great extent, things are comparatively stable. Then only growth and development can take place. So perception of individuals, groups, or communities, or at the global level, different countries, their perception of any country, it all depends on the extent to which you have been able to ensure internal and external security. Nobody would like to go for trade, commerce, or business or investment in your country if they feel that there is a lack of internal external security. They are fighting among themselves, or they're exposed to external threat. There's a lot of uncertainty, so nobody would like to. It means trade, commerce, business. You talk about growth and development. All such things are somewhere interrelated, connected. But the centripetal force is security. Security. When we talk about security, as I discussed earlier, when we talk about national security, we talk about the measures, specific measures which are taken by the government to protect a vital interest of society, life of the people, their property, their culture, their social structure, then the, the enforcement of human rights, a lot many new things may come within the bounds of it, which we have discussed in detail in the previous lecture. Now, in India, which institution has been given the responsibility to advise the government on the matters of national security? This is National Security Council. So National Security Council, now come to the topic which we are going to discuss. National Security Council is the apex institutional body, the most powerful body to give appropriate advice to the government of India on the matters of national security and foreign policy, and lot many things associated with that. National Security Council. So where is National Security Council is placed? In the government. We need to understand. I know all of you are aware of the parliamentary form of government, the structure of parliamentary form of government, the president or vice president, but I am not taking any chance. If there is, somebody has started preparation, a few weeks ago or something. So, this is your structure. At the top, you have
All of you know, our political administrative system, the structure of that system. At the top, you have president, vice president, you have prime minister, then you have council of ministers, council of ministers. And here I am not going to discuss parliamentary form of government or democracy because I have to focus on National Security Council. But it's a broad reference to the parliamentary form of government so that you have that structure in mind. Parliamentary form of government. Parliamentary form of government. Parliamentary form of government, you will find that executive power is divided into two: nominal executive power and real executive power. So nominal executive power lies with the president, who is the head of state. Prime Minister is the head of government. So executive power is divided into two: nominal executive power and real executive power. Nominal executive power lies with the president, whereas real executive power lies not with the prime minister. Real executive power lies with a multi-member body known as Council of Ministers, which is headed by the prime minister. So prime minister is not the repository of executive power. Prime minister position is important. Why? Because prime minister is the head of the institution which enjoys real executive power. So parliamentary form of government all over the world, wherever it is functioning, there are two principles to which it must conform to. Otherwise, it will not qualify to be called parliamentary form of government. First thing, the real executive power lies with the Council of Ministers headed by the Prime Minister. And second principle, that Council of Ministers headed by the Prime Minister is collectively responsible to the lower house of the legislature. In our country, Lok Sabha. Unclear? And then we know that the Council of Ministers is a, you can say, a colossal body as far as running the government on day-to-day basis is concerned. So this body may consist of 70 or 80 ministers, though there are limitations. But Council of Ministers is not so much wieldy, as an institution, because you have too many members. And if it is a coalition government, then ministers come from different political parties. Despite having a common minimum program, there can be a lot of contradiction, conflict, on one other issues. So a small concentrated body is created out of Council of Ministers known as cabinet. Any decision taken by cabinet ipso facto becomes the decision of the Council of Ministers. This point is clear. So you have real executive power lies with the Council of Ministers headed by the Prime Minister, and then a small concentrated body is created out of Council of Ministers. But in the Constitution, in the terms of the Constitution, real power lies with the Council of Ministers, which is exercised by the cabinet. Point is clear? Any decision taken by the cabinet, ipso facto becomes the decision of the Council of Ministers. So in the government, you can understand, around the significance of the institution of cabinet, which is headed by the Prime Minister. So in common parlance, in day-to-day life, you'll find the word cabinet is used more frequently. A decision has been taken by the cabinet. Cabinet has given approval to this policy. The Cabinet Committee on Security, Cabinet Committee on Financial Matters, Cabinet Committee on Political Affairs. So you have different committees, different cabinet committees are there. So Cabinet headed by the Prime Minister. This is the most powerful, Cabinet headed by the Prime Minister is the most powerful political institution of the country. Point is clear? So Cabinet is the most powerful political institution, and Cabinet is assisted by Cabinet Secretariat. Then is the highest policy making body of the country. It means any policy decision on behalf of the government, that first of all, that policy proposal of the government in decision is given approval by the cabinet, and then you introduce the bill, and in the house, and it is passed by the Lok Sabha, Rajya Sabha, sent to by the president, different thing. So here we are just focusing on the Prime Minister and cabinet. Point clear? So this is cabinet is the highest, you can say the most powerful political institution of the country, headed by the Prime Minister. So when we talk about government, we generally talk about cabinet headed by the Prime Minister. They take most of the decisions. All the decisions are taken by the Prime Minister and cabinet. Clear? Now, Prime Minister position is very important. As I said, the Prime Minister is not the repository of executive powers, real executive powers. Real executive power lies with the Council of Ministers, which is headed by the Prime Minister. But a Prime Minister is the head of that Council of Ministers, is the head of that cabinet. So that the Prime Minister position is significantly different from other ministers. Are you getting a point? So Prime Minister as the head of the cabinet, as the head of the Council of Ministers, so that the Prime Minister could discharge his responsibilities
properly or more effectively, to assist the Prime Minister, we need an institution. So we have Prime Minister Office. Remember, Prime Minister Office, PMO. PMO is not the government. PMO is there. It is totally dedicated to the position of the Prime Minister. So Prime Minister Office consisting of sometimes junior ministers and then some important bureaucrats or the advisors, all put together. Prime Minister Office. Prime Minister Office gives advice to the Prime Minister, or assists Prime Minister in number of ways, so that the Prime Minister could discharge his responsibilities very effectively. Okay, he could provide the required leadership. Okay, so Prime Minister, to assist Prime Minister, we have Prime Minister Office. So Prime Minister Office, to begin with, there was nothing like Prime Minister Office. It used to be Prime Minister's Secretariat. In 1947, we had a Prime Minister's Secretariat to assist Prime Minister. It continued for a long period of time. And then it was in 1977 that Prime Minister's Secretariat was replaced by this body, Prime Minister Office. Getting a point? So in 1947, we had Prime Minister's Secretariat to provide all the administrative or advisory assistance to the Prime Minister. It continued, and 1977, this Prime Minister's Secretariat was replaced by a new institution, that is Prime Minister Office, Prime Minister PMO Office. Remember that PMO is neither a constitutional body nor a statutory body. It has not been established by the Constitution. It has not been established by any law enacted by the Parliament. PMO is a body which has been established by the executive order of the government. Executive order of the government. What is clear? Now you have a Prime Minister Office. Now the Prime Minister Office is assisted by National Security Council. National Security Council. National Security Council, again, is not a constitutional body. National Security Council is neither constitutional body nor a statutory body. It has been established by the executive order of the cabinet. Executive order of the government. National Security Council has been established. It was established on 19th November 1999 by Atal Bihari Vajpayee government. So National Security Council, earlier, the role which is being played by National Security Council today, this role was played by the office of the Principal Secretary to the Government of India. So Principal Secretary to the Government of India used to play the role of National Security Council. So it was replaced. It was replaced in 1999. 1999, National Security Council was established. Clear? So National Security Council, again, it is neither a statutory body nor a constitutional body. It has been established by an executive order. Clear? So National Security Council is the apex body, is the apex body, considered the highest or the most powerful body, which gives advice to the PMO. National Security Council has been established to give advice to PMO, Prime Minister Office, give advice to the Prime Minister on the matters of national security and foreign policy. As I discussed, because national security, as I discussed earlier, that I've discussed that national security consists of so many subject matters. So that's why you can say it is not only a foreign policy or a national security, just two important subject matters are there. Because national security itself brings within its purview so many subject matters, environmental security or cyber security, a lot of things are there. So on the security matters, advice has to be given. National Security Council is there to give advice to the Prime Minister. Advice to the Prime Minister. Clear? It was established in 1999. Since then, it has been in continuance. Clear? Now, National Security Council. What kind of structure there of the National Security Council? It has a three-layered structure, three-tier structure. At the top, you have, as you can see, National Security Council. It has three-layered structure. At the top, you have a strategic policy group. Then you have National Security Advisory Board, and then you have Secretariat. So this is the structural element. At the top, you have a strategic policy group. A strategic policy group is headed by NSA. Very frequently you come across what NSA, National Security Advisor. अजीत डोवाल को सब बच्चे जानते हैं, ठीक है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
So he is the head of the strategic policy group, which is at the top. And then strategic policy group is assisted by National Security Advisory Board. Okay, then strategic policy group and National Security Advisory Board, both of them are assisted in number of ways by the secretariat. So what are the comparative role and functions? At the top, you have a strategic policy group. The main role of strategic policy group is to give shape to national security policy. Okay, so to achieve interministerial coordination, to collect inputs from the different ministries and departments, and using that input to give shape to national security policies. All those subject matters which are related to, in one other ways, which are related to national security, all the subject matters are taking into consideration. Is the topmost body, you can say, in National Security Council. So collecting information, having to achieve interministerial coordination, to collect input from different ministries on subject matters related to security, internal or external security. Okay, and then on the basis of such inputs, giving shape to national security policy. What can be done or what cannot be done, to anticipate things and to give advice to the government, regarding the course of action to be followed. Remember, National Security Council is an advisory body. National Security Council gives advice. It does not have executive power. It gives advice to the government, and then, if accepted, it can be executed. So, in National Security Council, at the top, you have strategic policy group, and then you have National Security Advisory Board. As the term itself expresses, it consists of experts from different experts from intelligence agencies, or for that matter, our defense forces, army, navy, air force. Again, then some experts from the field of information technology or AI. So you can. This is an ensemble of experts from different fields, information technology or cyber security, or for that matter, you have you have the heads of intelligence agencies, IB or RAW, then heads of the Army, Navy, Air Force. All such persons put together constitute National Security Advisory Board. Recently, in the wake of Pahalgam attack, the government revamped National Security Advisory Board, and Alok Joshi was made the head of that, like a former chief of research and analysis wing. And along with that, we have many officers, former officers of the Army, Navy, and Air Force, senior officers. They too have been appointed to National Security Advisory Board. And what is the role of National Security Advisory Board? National Security Advisory Board gives recommendation to the strategic policy group. This board consists of top experts, retired bureaucrats, officials, persons having expertise. So they examine the strategic, the security. They examine the case of security in different aspects. Yeah, and then they design different courses of action. They give recommendation that which course of action has to be followed. So a lot of research, analysis, long-term vision, because something like this is taken care of by National Security Advisory Board. So they, on the basis of the available input, they examine the situation, they review the situation, what is the security condition, where what are the areas where we are vulnerable, okay, and what can be the available, what are on the basis of available resources, they design different possible courses of action, and then they suggest which course of action has to be followed. Okay, so they diagnose the problem. They on the basis of intelligence, and then they go to the manifest of details, observation, analysis, and then designing different possible courses of action, and then suggesting which one to follow. So what are the problems and how to solve the problems and the possible solutions. On the basis of this observation, analysis, they give their advice, their recommendation to the strategic policy group, which may give the final shape to national security policy accordingly. And then you have secretariat. The word secretariat itself means a lot of secretariat. Wherever the word secretariat comes, cabinet secretariat or Rashtrapati Bhavan secretariat, Lok Sabha or Raj Sabha, secretariat means that an institution is there to provide, to provide administrative assistance, to collect intelligence, go for the processing, then documentation, working, and again giving advice, providing logistic support. So you have secretariat which provides support, logistic support to National Security Advisory Board, and they maintain
the relationship with different ministries and departments, that is licensing. Then coordination, interministerial, inter-institutional coordination they maintain, and accordingly they ensure that required inputs are made available here. And Secretariat also assists strategic policy group, when it comes to give final shape to national security policy. So the role of Secretariat is very, very important in policy formulation, in collection of intelligence, in maintaining interinstitutional coordination, and whatever decisions are taken by strategic policy group at the top, such decisions are implemented. They ensure that such decisions are implemented. All the directions are implemented in the ministries, departments, and agencies, and they are in position of lot of information. They also, they are constantly in touch with intelligence agencies. And in the secretariat you can find the four verticals. It means in the secretariat you have, you can say, the four distinctly identifiable branches are there to look after four different subject matters like internal affairs, so military affairs, or intelligence and technology. Are getting a point? In secretariat you have four departments, you have four branches to look after four different functions, which is related to internal affairs, strategic planning, internal affairs, intelligence and technology, and military affairs. So Secretariat has a very important role to play. So you have a strategic policy group, you have National Security Advisory Board, and you have Secretariat. Three-layered structure is there. This is more concerned with processing, documentation, execution, and providing logistic support. They are more concerned with giving appropriate advice and recommendation to strategic policy group. Okay, here you have, this is the zone which is an ensemble of lot of expertise, knowledge, and a lot of experience. So they go for the long-term strategic analysis of the security of the country, and they advise NSC, National Security Council. They give advice to or recommendation to strategic policy group, and finally, matter is discussed in the National Security Council, currently suggesting options. So they suggest various courses of action to be followed. These are the bodies. So they work in integrated manner. It's not like they are working three different watertight compartments. No. Strategic Policy Group, National Security Advisory Board, and Secretary all put together. They work in close cooperation with one another, although they have a well-defined jurisdiction of their own. And then you have a National Security Council. Here you have representation, of this is a bigger body. National Security Council consists of functionaries from the different institutions and agencies. I hope the point is clear up to this. So you have a parliamentary form of government. In parliamentary form of government, you have a council of ministers headed by the Prime Minister. Prime Minister is the head of the government, and Prime Minister, head of the cabinet. Prime Minister to discharge his responsibility properly. To assist Prime Minister, you have Prime Minister's office. To assist Prime Minister, you have Prime Minister's office, and Prime Minister's office needs, valuable inputs so that it could give appropriate advice and support to the Prime Minister. So Prime Minister's office, Prime Minister PMO, to support PMO on the security matters, you have National Security Council. So National Security Council, the extra constitutional body established by executive order. This National Security Council gives recommendation, gives advice to PMO on the matters of national security and policy. And National Security Council consists of three-layered structure. Okay, you have a strategic policy group at the top, which is headed by National Security Advisor Ajit Doval jaise honge. Okay, strategic policy group headed by the NSA. Okay, and then you have National Security Advisory Board. This is something which is created to avail of the advantage of experience, knowledge, and wisdom. So retired officials, senior officers, those who have a lot of knowledge, experience to contribute into the process, they are invited. Because so this is the zone of long-term strategic analysis, and they give advice to a strategic policy group or National Security Council, and then you have Secretariat to provide all kind of administrative support or contribute to policy making. It has four distinctly identifiable, the departments, the branches to look after strategic planning. These are distinct areas, although they are interrelated, interconnected. You have strategic planning, internal affairs, military affairs, intelligence, and technology. So these are the four areas. This is the structure. Point clear? Next, you have National Security Council. Now, I have a structure. I have discussed National Security Council and three-layered structure: Strategic Policy Group, okay, then National Security Council Advisory Board, and then Secretariat. Point clear? Now, what about National Security Council?
So National Security Council is headed by the Prime Minister. National Security Council is headed by the Prime Minister. Prime Minister is the chairman, and NSA, National Security Advisor, is the secretary to National Security Council. So Prime Minister is the head of the chairman of National Security Council, and Ajit Doval साहब जो है, ठीक है, National Security Advisor, he is secretary to National Security Council. Clear? So your Prime Minister, National Security Advisor, NSA, ठीक है, secretary to National Security Council. Now, to as this National Security Advisor, now you have position of additional National Security Advisor, additional National Security Advisor, ठीक है, then Deputy National Security Advisors, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर कोई कमिश्नर है तो एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनके पोजीशंस होते हैं एडजस्ट करने के लिए. So that positions have been created. So additional National Security Advisor, this position was filled in there was a position, I think it has, a person has been appointed to that position so that the National Security Advisor would have adequate time to focus on core areas of, are getting a point? National Security Advisor. Now you have appointed additional National Security Advisor, and you have Deputy National Security Advisors, so that they could take some burden off the shoulders of NSA, National Security Advisors, so that he could focus more on the core areas of national security policy making. This is the point. So Prime Minister, National Security Advisor, and then you have Deputy National Security Advisors. And who are the members of National Security Council? The list is very long, but I'm just mentioning some important positions. So who are the members of National Security Council? In the National Security Council, you have so NSA and Prime Minister is the chairman, and NSA is the secretary to the National Security Council. Then you have members, Cabinet Secretary, then you have Chief of Defense Staff, so Cabinet Secretary, CDS, then Vice Chairman, Niti Aayog, then Chief of Army, the Navy, then Air Force, then you have the Chairman of ISRO and DRDO, okay, so Defense Development Organization, then the Chief of RAW, the Director of RAW Research and Analysis Wing, then IB, then Finance Secretary, then you have a Defense Secretary, so Finance Secretary, Defense Secretary, Home Secretary, okay, and then Vice Chairman, as I discussed, of Niti Aayog. So all such functions are there. So this is a long list. Members of, तो इसको बिल्कुल भी याद करना डिफिकल्टी. जो इंपॉर्टेंट जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उन सब का रिप्रेजेंटेशन है. जैसे होम सेक्रेटरी भी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी इसके अंदर है, ठीक है, वाइस चेयरमैन नीति आयोग भी हैं, फिर तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो भी इसके अंदर है, सीडीएस भी हैं, फिर डीआरडीओ, इसरो जो है उसके मेंबर्स भी इसके अंदर है, फिर आपके डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस जो मिलिट्री से जुड़ा, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उसके भी जो हेड है वो ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. ये सब इकट्ठे के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इज अ वेरी ब्रॉड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. So you have representation from all those institutions which play strategically, they play a very important role in national security. So very broad-based decision-making body, National Security Council. One clear? And what is the role and function of the National Security Council? ये समझ गए? ठीक है. और National Security Council का जो structure था, ये यहाँ पे देख चुके हो. National Security Council, उसके बाद उसके अंदर जो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और सेक्रेटरीट. क्लियर? नाउ हैव अ लुक ऑन द फंक्शंस ऑफ एनएससी. एकदम सिंपल है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस? टू गिव इंपॉर्टेंट एडवाइस, रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, देन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, तो गिविंग एडवाइस टू द पीएमओ ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी. Then collection of intelligence from the different agencies, collection of intelligence, collection of input from the different ministries and departments which are related to the matter of national security. What is clear? And then ensuring that such recommendations are properly implemented. If approved by the government, then these are properly implemented through secretariat. So you have a look here, advising PMO on matters related to national security, foreign policy, domestic, foreign, or intelligence, military, or environmental issues. So there's interministerial coordination to achieve synergy in policy formulation, and assessing intelligence gathered by IB and RAW, to intelligence inputs that you collect from IB and RAW and some other institutions and agencies, and then you identify what is you apply that sense of eclecticism, what is relevant, and accordingly you consider those inputs to frame your national policy on policy on security.
Policy on national security. The national security policy and strategies, undertaking strategic defense reviews from time to time. You undertake defense, reviews, identifying long-term and short-term security threats. So, long-term and short-term security threats. It is not necessary that it will be in the context of security of the territorial boundary of the country. It may be related to environmental security. It may be related to environmental security, cyber security, the human security, cultural security, or social security. So, what are the threats? The vulnerability of any zone or any threat, and accordingly, you give suggestions how to address that. So, it is expected of National Security Council and the National Security Council not to be reactive only. You anticipate the possible threats in future, and accordingly you give suggestions how to prepare for the same. It is suggested that National Security Council should have a dedicated body to anticipate futuristic the scenario, any kind of possible threat to the security of the country in one other areas, and to give advice to the government what can be done. Understanding strategic defense reviews, identifying long-term and short-term security threats, and promotion of integrative approach. That national security is something too important. National security, the matter of national security is too important, too complex and too important to be left to be taken care of, by one institution or agency. So you have dedicated institutions and agencies, but such institutions and agencies are required to be supported by the society. National security, yes, dedicated institution is there, but that is also required to be supported. So integrative approach, government institutions, agencies, or private agencies, or civil society, the media, or citizenry, all put together, different research and development organizations, institutions, how to bring all of them in some kind of rhythmic association, and collection of input or sharing of information, so as to make national security a responsibility of all. So in togetherness, we can achieve or we can accomplish fantastic things which none of us could accomplish in individual capacity, howsoever competent, an institution or individual may be. So that is spirit of collectivism. National security is something, the responsibility of which has to be taken by the entire society. Though you have specialized bodies and institutions, but that is not enough. All of us have to contribute in the process. नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई आपको दौड़ने भागने के लिए नहीं कह रहा है कि आप जाइए और प्लान बनाइए और पॉलिसी बनाइए और बॉर्डर पे चले जाइए, लेकिन आप इतना भी काम अगर करते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई डूज एंड डोंट्स तय करती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप वो काम भी अगर करते हैं, अपने एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं आप, एक सेंसिबल आप एक सिटीजन है, तो गवर्नमेंट ने जो भी डायरेक्शन दिया आप उसको फॉलो करते हैं और दूसरों को भी आप एनकरेज करते हैं कि वो उसको फॉलो करें, तो आप भी कंट्रीब्यूशन, आपका भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी में. अगर गवर्नमेंट ने कहा, कोई डायरेक्शन आया कि शाम को 8 बजे ब्लैकआउट होगा सिटीज़ में, एक मॉक ड्रिल करना है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन अगर आ गया ऐसा, एक मॉक ड्रिल करना है 8 बजे, आप किसी भी जगह पे हैं, किसी कॉलोनी में हैं, अपार्टमेंट में हैं, गांव में हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को निकल के आके वो लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है. ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं, अरे गवर्नमेंट ने कह दिया कुछ भी, अब ठीक है देखिए, नहीं, गवर्नमेंट कुछ सोच समझ करके बता रही है वो सही चीज़, आप उनके साथ चलेंगे. कोरोना काल में बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट किया. गवर्नमेंट ने जैसा कहा, हम सब लोग उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको फॉलो किया. तो नेशनल सिक्योरिटी जो है उसमें बहुत सारी बातें हैं. क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, कोई पैंडेमिक कोरोना टाइप कोई चीज़ आती है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करती है. तो उन सब का सामना कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एजेंसी अकेले नहीं कर पाएगी. पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए हम सब लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, वो पब्लिक प्राइवेट, ये सब मिलकर काम करते हैं. आपने कुछ बढ़िया डिस्कवर किया है, कुछ सही, तो आपने इनपुट गवर्नमेंट को दिया कि गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए. आज नेशनल सिक्योरिटी का मैटर ये तो नहीं है. नेशनल सिक्योरिटी का मतलब कि बस इसरो, डीआरडीओ हैं और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, बस वो अकेले वो बेहतरीन काम कर रहे हैं. लेकिन आज बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रोन बना रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं. तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल सिक्योरिटी. इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का काम केवल गवर्नमेंट का नहीं है, कई सारे एनजीओज हैं, वॉलंटियर एजेंसीज हैं. वो क्या आप अपने अपार्टमेंट, अपने एरिया में क्या आप लोगों को एनकरेज नहीं कर सकते कि भाई आप भी 2-4 पौधे लगा दिए कीजिए, ठीक है? तो आप जब ये सब कर रहे हैं तो एनवायरमेंट सिक्योरिटी में काम करते हैं, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पे आप काम कर रहे हैं. आपको अपनी तरफ से ध्यान देना होगा कि आप एनर्जी का मिसयूज आप नहीं करें, गलत यूज नहीं करें.
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप उसको भी समझते हैं, जानते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे कई तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एनएसटी, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटिव अप्रोच, फॉस्टरिंग collective enterprise of the government agencies, citizenry, private sector, civil society for information sharing, processing, सब मिलकर उसमें काम करते हैं। पॉइंट क्लियर? ये आपके हो गए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन, ये हो गया स्ट्रक्चर। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है, आप वेरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यू नो, वेरी ब्रॉडली वाइडली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। You have representation from different institutions of the government who have an important role, you know, to play in the national security. This is National Security Council structure. उसी का explanation है. At the top you have a strategic policy group, then you have National Security Advisory Board, and you have Secretariat. I have discussed. Strategic policy group is mainly concerned with interministerial coordination, integration of relevant inputs from different agencies, and then long-term strategic review of country's security. Strategic policy group headed by NSA. Okay? Then you have National Security Advisory Board, experts from the different areas, foreign affairs, defense, strategic analyst जो है, टेक्नोलॉजी उस पर काम करने वाले लोग हैं। एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, फॉरेन अफेयर्स जुड़े हुए लोग हैं, डिफेंस रिलेटेड लोग जो हैं, नियर वो आपके जो कोई मार्शल हैं और जो जनरल्स हैं, तो वो ऐसे लोगों को आप इसमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं। फिर IBU रॉ के जो चीफ रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ, उनको भी आप इसका मेंबर बनाते हो। ठीक है, इनका काम क्या होगा? लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑन सिक्योरिटी इशू एंड गिविंग रिकमेंडेशन ऑन पॉलिसी ऑप्शंस। ये ऑप्शंस हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज ऑफ एक्शन है, इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, प्रोस एंड कॉन्स क्या होगा, लेकिन उनकी समझ में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इस तरह के रिकमेंडेशन देते हैं। और ये आपका सेक्रेटरीट जो बता चुके हैं, सपोर्टेड बाय द जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। इसके 4 एरियाज हम बता चुके हैं: स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल अफेयर्स, इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, ये बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को और उस पर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को। और इसके लाइजनिंग काम है, इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन जो अपने वहाँ पे है ना, इसमें मेन काम एग्जीक्यूशन का इनका है, सेक्रेटरीट का। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग, ऑल सच थिंग्स आर देयर, इशूइंग डायरेक्शंस, एग्जीक्यूट द डिसीजंस टेकन एट द टॉप इफ इट इज अप्रूव्ड ऑफ, ये सब चीजें। एंड लिमिटेशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब उसकी आज लिमिटेशंस क्या है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो ठीक है, फिलहाल वो अच्छा काम कर रही है और हम लोग जानते ही हैं हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और पूरा देश उन पर भरोसा करता है। हम लोग मानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। वेरी एक्सपीरियंस, वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो लिमिटेशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर भी कोई भी इंस्टीट्यूशन एजेंसी परफेक्ट नहीं होती है, उसके कुछ लिमिटेशंस होंगे, हम लोग उस पर लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है वो भी चेंज होता रहता है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, नए नए डेवलपमेंट्स होते जाएंगे। ये केवल टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर ही नई नई तरह की बातें होती रहेंगी। जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अचानक देखे कि धीरे धीरे एक मूवमेंट टाइप चल रहा है कि हर स्टेट के अंदर लोग ऐसी बात करने लगे, नहीं नहीं हम पहले मराठी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज, तो बंगाली है तो हिंदी है, तो हम हिंदी को नहीं मानेंगे, तुम तमिल को मानेंगे। अगर रीजनलिज्म भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है कई सारे स्टेट्स में, अगर ये, तो वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज वो भी एक तरीके का है। तो ये केवल मैटर एज ए सेट, इट इज़ नॉट मेनली कंसर्न विद मिलिट्री और फिजिकल सिक्योरिटी। ये सोशल स्ट्रक्चर आपका है, जो आपका कल्चर है, कल्चरल क्लासेस हो सकते हैं, दो अलग ग्रुप्स और कम्युनिटीज़, दोनों के कल्चर अपने अलग अलग, ऑल्दो दे आर or they are the integral part of Indian culture. But there can be conflict of interest between the two cultural groups on one of the grounds. ऐसे कई तरह के नए मैटर्स हमेशा आते रहते हैं, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे यू कैन नेवर बी कॉम्प्लेसेंट। ठीक है, नए दिन, हर दिन डेवलपमेंट नए नए होते रहते हैं, इसलिए यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट एंड विजिलेंट। इसलिए इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, ओनली एडवाइजर। NSC का एक है कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, वो सिर्फ एडवाइजरी रोल है, दे गिव एडवाइस टू द PMO। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन वो तो PMO, गवर्नमेंट और वो सब तय करेंगे। ठीक है, PMO को एडवाइस देंगे वो, फिर प्रधानमंत्री जो है उस मैटर पे कैबिनेट में चर्चा करेंगे। इतना तो आप लोग जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट चलाएगी, PMO नहीं। PMO इज देयर टू असिस्ट ओनली प्राइम मिनिस्टर।
PMO is not supposed to take decisions of the government. That will not be in keeping with the principles of democracy. तो लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, ओनली एडवाइजरी रोल एनएससी का है. उसके बाद पर्सन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, पोटेंशियल फॉर ओवर सेंट्रलाइजेशन. ये पर्सन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, जब हम लोग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की चर्चा ही नहीं होती है, हम लोग हमेशा किसकी बात सुनते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल सब रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड है. एक पर्सन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकता. इसलिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, लेकिन इस पर भी काम करने की जरूरत है कि उसके पास क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है, और वो बॉडी धीरे धीरे इम्पर्सनल हो, ठीक है, तभी वो सस्टेनेबल होगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है. उसके भी कुछ खास आपने कोई सर्विस ऑर्गेनाइज कर रखा है, उसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं आप, ठीक है, एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए एज एन इम्पर्सनल एंटिटी, सो दैट the one national security advisor, National Security Council does not end up becoming heavily dependent on the person of National Security Advisor. It has to be an impersonal entity. What is clear? So that is, that no organization should be person-centric. A person can play a very important role in giving shape to an organization to make organization successful, but we cannot afford to make organization totally dependent on that person. Because as long as he is contributing, things may be very good and fine, hunky dory, everything is fine. But what if that person leaves that organization? The organization has to be made an impersonal entity. That is the point. Person-centric organization, potential for over-centralization, lack of direct accountability and constitutional backing. NSC has not been established by the Constitution. It's not established by the Parliament. It has been established by an executive order. It reports to, gives advice to the Prime Minister. So there is no direct accountability to the Parliament or the people. It gives advice or recommendations to the government. PMO. It's PMO. So there is lack of direct accountability and constitutional backing. Then you have limited resources and expertise. Okay, so we have to work on that front, or to a great extent such limitation has been addressed. Okay, then today you have many experts in the National Security Council, but still there is a gap which has to be bridged. And then implementation issues are there. They can give advice, best of the advice to the government, but much depends on the political leadership. Political leadership, their willpower, okay, and the extent to which they are committed to the cause of national security. और गवर्नमेंट एक जैसी नहीं होगी, हर समय मोदी जी नहीं होंगे. आज मोदी जी हैं तो नेशनल सिक्योरिटी उस पर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है. हर तरीके से जो हम लोग डिस्कस किए थे नेशनल सिक्योरिटी का पूरा स्कोप, शायद बेस्ट गवर्नमेंट है ये, ठीक है बात, ठीक है. स्वतंत्र भारत के इतिहास में मुश्किल आप इस गवर्नमेंट कंपेयर नहीं कर सकते किसी और गवर्नमेंट से, काफ़ी आगे. नेशनल सिक्योरिटी के अलग अलग डायमेंशंस पे एक साथ जो गवर्नमेंट ने काम किया है वो शानदार काम किया. शायद ऐसी टीम हमेशा रहे जरूरी नहीं है. ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, शानदार काम कर रहे हैं. आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं यहाँ, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि दे आर इनडिफरेंट, दे आर नॉट कंसर्न, वो पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है. ऐसा नहीं. यू एग्री और यू डोंट एग्री, बट यू कैन नॉट इग्नोर. तो लिमिटेड. देन इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आर देयर. एडवाइस देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक होगा ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है. और जब लोग कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर. दीज आर द लिमिटेशंस. उसके बाद लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? इम्प्रूवमेंट्स इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. इम्प्रूवमेंट्स ये है कि देयर हैज टू बी अ नेशनल सिक्योरिटी strategy. There has to be a more stable national security strategy document, okay, that comprehensively deals with national security, different aspects of national security, how the institutions of the government are supposed to function, what kind of interinstitutional relationship will be there. So things, I don't mean to say that has to be a rigid kind of organization, but that there has to be greater amount of clarity, a greater amount of stability. That comprehensive national security strategy document, greater amount of stability and predictability. Greater amount of stability and complete predictability is not possible. You're working national security, there are many things which are required to be kept secret. Because sometimes you are required to give shock and surprise to your enemies, those who are giving threat to, or those who have become a threat to national security. A lot of things are there, but a greater amount of stability and predictability has to be there. Okay. Then you have inter-institutional coordination. We need much better inter-institutional coordination, different ministries, departments, agencies, so that the relevant inputs
from the different agencies related to national security could be collected, could be processed. Okay, in a more professional manner, we could respond to the national security threats. So you have integrated planning, the sharing of information, integrated planning, then joint assessment of the scene situation. So more of the much better, you can say, integrative approach or collaboration is required. The assessments, so integrated planning, joint assessment of situation based on shared information, because when government is moving in that direction, there's no doubt National Security Council has evolved a lot. So these days you can, that National Security Advisor and National Security Council Secretariat, both of them have been brought within the ambit of allocation of business rules. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर इन दोनों को लाया गया है. So there is a greater amount of certainty and predictability in their operations, in their function. Then you have expertise in emerging technologies. Again, National Security Council, it is just not enough to establish an institution like National Security Council. Like any organization, every organization is like a living organism, living being. Like it evolves, it grows with the growth of society, it dies with the death of society. If the government is progressive, society is progressive, then institutions are likely to be progressive. It is just not enough to establish an institution. From time to time, you are required to make an assessment of the prevailing situation. What is the scenario of national security? What kind of threats? What is the level of competence and capability? Our ability to respond to the situation, and accordingly, we are required to improve upon the tools, technique, method, process, technology, even on the structure. So all such things are required. So we need more of expertise in emerging technologies, be it a cyber security or artificial intelligence, robotics. There are many areas of specialization where from we need best of the experts in the National Security Council. Expertise in emerging tech. Then only we can deal with the contemporary challenges, and then we can prepare ourselves for the situation that may arise in the future. एक बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम जो संबोधन था आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि इसे भी फिलहाल स्थगित किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, चलता रहेगा. अभी कुछ समय पाकिस्तान के पास होगा, पाकिस्तान जो है वो भी असेसमेंट करेगा सिचुएशन को कि भारत ने जो भारी तबाही मचाई है, झूठ फरेब को सबको सामने ला के रख दिया, उनके एयरबेस को उड़ा दिया, बहुत सी चीज़ें, तो वो भी उस पर लगातार काम करेगा. फिर वो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा कि शायद फ्यूचर में हम लोग कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं कि हम लोग खुश हो गए कि हमारा जो है डिफेंस सिस्टम जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, कल फ्यूचर में वो चाइना के साथ और तुर्की के साथ मिलकर के कुछ ऐसा बना सकता है. इसलिए हम लगातार काम करते रहेंगे. अगर 2-3 साल में जब तक पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, उस लेवल पे आएगा कि ठीक है कि वो हमें चकमा दे सके, तब तक हम लोग बहुत आगे जा चुके होंगे. ये जो डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो गैप है, इस गैप को केवल मेंटेन नहीं करना है, इसको लगातार बढ़ाते जाना है, से लगातार काम करते रहेंगे. इसलिए हमें टॉप एक्सपर्ट्स चाहिए. ठीक है, और हम लोग पाकिस्तान को तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहे हैं. मेन तो चाइना है, हम लोग चाइना उसको लेकर के चल रहे हैं. तो एक्सपर्टीज इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड एडवाइस. तो अगर आपके टॉप एक्सपर्ट्स अगर होंगे तो वो सही एडवाइस दे पाएंगे किसको? प्राइम मिनिस्टर को, पीएमओ को. ठीक है. अभी इस दिशा में गवर्नमेंट ने काम किया है. तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर विद इन इसकी एक बॉडी ऑफ ऑफिस जो है वो बना दिया गया है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, उसके अंदर ही साइबर सिक्योरिटी जो है कोऑर्डिनेटर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये ऑफिस बनेंगे. साइबर सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और ये इवॉल्विंग फील्ड है, लगातार इसमें बदलाव और परिवर्तन होते रहते हैं. तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट. ठीक है, लोग जो हैं वो, पब्लिक जो है वो सेलिब्रेट करती रहती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मीडिया वाले अपना काम करते रहते हैं. लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, डीआरडीओ, इसरो, टॉप आर्मी कमांडर्स हैं, ठीक है, ये सब गंभीर लोग हैं. ये आज जो हुआ वो नेक्स्ट पे काम करना चालू करेंगे, बिल्कुल शांति से काम करते हैं. आज जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जो कुछ हुआ, भारत ने दिखाया दुनिया को कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं. ये बहुत ही साइलेंटली, धीरे धीरे अपना काम, लगातार वो कमिटमेंट, डिसिप्लिन इतने लोगों का रहा होगा, तो उन लोग ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजिक फोरसाइट इन लॉन्ग टर्म. तो एनएससी के अंदर हमें कैपेसिटी बिल्डअप करनी होगी कि लॉन्ग टर्म फोरसाइट हम लोग एंटिसिपेट कर सकें, देख सकें
how national security scenario is going to is going to change in the coming years, and are we really prepared for the same? You have to be constantly alert and vigilant. So we need this kind of competence, this kind of capacity and ability. Strengthening National Security Council's capacity for long-term thinking and planning, establishing a dedicated national security foresight unit, a dedicated national security foresight unit, एक खास यूनिटी आपने बनाया, इसका काम ही यही है कि वो दूर की सोचते हैं, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। आज की सिचुएशन ऐसी है, हाउ द प्रेजेंट सिचुएशन इज गोइंग टू इवॉल्व इन फ्यूचर, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है, एंड देन हाउ टू डील विद द सेम। देन यू हैव ट्रांसपेरेंसी एंड अकॉर्डिंग, सिंपल पॉइंट है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पहली बात यह कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग में don't look for the kind of transparency or accountability that that we see in the case of ministries or department जहां हम लोग expect करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कई सारे मैटर्स, सब्जेक्ट टू द imperativeness of maintaining secrecy on certain matters which are very much sensitive, which are very very important for our national security, subject to such exception, okay, then we can work for transparency and accountability. The higher the level of transparency and accountability, okay, the more will be the public trust and confidence. Point clear? But I told you the standards that you apply here has to be different from the standard that you apply to other governmental institutions and agencies. For national security, there are certain things, there may be certain information or intelligence which cannot be shared or which should not be shared under any situation and circumstance. It is for the government to decide. Transparency and accountability, then coordination with states. National security, as I said, national security is not something to be taken care of. It is too complex a matter to be taken care of only by National Security Council or some institutions and agencies of the government. So national security is something where state governments or the local government, all of them have their respective roles to play. So if we have some kind of, if you don't have cooperative federalism, no problem. You have federalism, gradually will have cooperative federalism. But at some places you see frictional federalism. Some states have developed a new model of federation, that is frictional federation. So we need to bring states on board. Okay, there has to be a good relationship between central government and state government on security matters. Politics, elections अपने टाइम पे चलते हैं, लेकिन on the matters of national security अभी कुछ state governments ऐसी हैं भारत में, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसको ये सीखने की जरूरत है। कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको सीखने की जरूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो मैटर होता है वहां पे आपकी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। अभी हमारी डेमोक्रेसी और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टीज, कुछ स्टेट गवर्नमेंट अभी वो इवॉल्व करके उस लेवल तक, मैच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि एक पॉइंट है जहां पर अब नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, अब इस पे हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। इनका ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा या कोई ऐसी लाइन नहीं है। इसलिए जरूरत है कि स्टेट्स को भी साथ लिया जाए। स्टेट्स के बीच में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन एजेंसीज में और स्टेट बॉडीज एजेंसीज के बीच में बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिपेंड ऑन विम्स एंड फैंसी ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर, एनी पॉलिटिकल लीडरशिप। थिंग्स आर टू बी मेड impersonal. There has to be a proper structure, rules, regulations, and defiance cannot be allowed. Okay, cooperation on the matters of national security is not something, it's too important a thing to be left to the discretion or to the mercy of any leader or any government. Okay, wherever it is possible, there has to be a clear-cut policy and strategy. There's a clear-cut policy, strategy, rules, regulation, conventions, everything should be there. So that we are not dependent on any, हम cooperate नहीं करेगा तुम्हारे साथ, क्यों नहीं करेगा? कॉपरेट नहीं करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे, आप कॉपरेट नहीं करेंगे। ऐसे गवर्नमेंट्स है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, कई बार आप देखते हैं ये होगा, वक्फ कानून आएगा, ये नहीं, वो डिस्कशन अलग है वक्फ का क्या गुड और बैड, लेकिन पार्लियामेंट ने कोई लॉ अगर बना दिया है तो वो आपको इन्फोर्स करना है। आप लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। हाउ कैन स्पीक लाइक दिस? आप चीफ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं, आप ऐसा कैसे बोलेंगे कि नहीं हम उस कानून को बंगाल में लागू नहीं कर? बंगाल के बाहर से अलग है, तो बंगाल है या फिर वो आपका तमिलनाडु है, या कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे दिक्कत। तो ये बात केवल बंगाल तमिलनाडु की नहीं है, सभी स्टेट्स की, कोई भी स्टेट कभी ऐसा नहीं करे। नेशनल सिक्योरिटी मैटर पे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते हैं किसी के मूड्स और विम्स और फैंसीज और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे। किसी को परसुएट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपको करना होगा। एलिमेंट ऑफ डेफिनेटनेस हैज टू बी देयर। देन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट्स,
इसमें पॉइंट याद रखोगा आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेशन चाहिए बट कोऑर्डिनेशन हैज टू बी फॉर्मल, देयर हैज टू बी स्ट्रक्चर फॉर दैट। ठीक है, हम परसुएट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम आपके मूड पे डिपेंड नहीं करता है ये। नेक्स्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम। So for national security, we need to develop, some kind of simulation centers. ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट, अचानक कोई घटना घट जाए तो कैसे डील करेंगे, इसका मतलब ये है कि दोज हु आर एसोसिएटेड विद नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, दे शुड बी ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स विच दे हैव नेवर सीन इन द पास्ट, न्यू सिचुएशन में अराइज। तो उसके लिए कुछ सिमुलेशन सेंटर्स हो सकते हैं जहाँ पर आप उनको ट्रेन करेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए। एकदम सिंपल है, क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम, लार्ज स्केल सिमुलेशन एक्सरसाइज टू improve preparedness, level of preparedness towards security emergencies, ठीक है। नेशनल क्राइसिस सिमुलेशन सेंटर हैज टू बी established। ठीक है, आप उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मॉक ड्रिल्स वगैरह जैसे होता रहता है वो करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर करते हैं, उसके पहले कई बार मॉक टेस्ट देते रहते हैं, वो टेस्ट सीरीज सब ज्वाइन कर लेते हैं, एकदम रिचुअलिस्टिक हो गया आजकल, तो वो करना ही है। ठीक है, तो वैसे नेशनल सिक्योरिटी जो लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग लगातार होती रहनी चाहिए, ओरिएंटेशन होते रहना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सिनेरियो कभी स्टैटिक नहीं रहेगा। न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज विल कीप कमिंग एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स। Then non-traditional security challenges are not always traditional, they can be non-traditional security challenges। सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है कोई एलियन वहां से आज आके सिटी में तबाही मचाए, ऐसा नॉन ट्रेडिशनल, क्लाइमेट चेंज हो गया, पेंडेमिक कोरोना टाइप कुछ अगर हो जाए, हर बार जरूरी नहीं कि सब कुछ कोरोना जैसा एक नई बीमारी आ गई, तो हमें उन सब के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में कम, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द सेम। आप उसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ग्रेजुअली यू कैन डेवलप ए माइंडसेट, दैट समथिंग लाइक दिस कम्स एंड विल रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन लाइक दिस। आप एग्जैक्टली वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन होगी, लेकिन उसके लिए जैसी मेंटल कंडीशनिंग चाहिए, उसके लिए जैसा ओरिएंटेशन चाहिए। देखिए, आप घबराए नहीं, आपको ट्रेन किया गया है कि अनप्रेडिक्टेबल चीजें घटेंगी, वहां पे आप कैसे डील करो। ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसको डील करने की व्यवस्था होनी चाहिए। लास्ट में ensuring continuity and institutional memory, that is clear cut selection। NSC जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, it has to be made more professional, its structure has to be far more stable, कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होंगे या एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ही आगे चल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाएंगे। क्राइटेरियंस फॉर सिलेक्शन हैज टू बी वेरी क्लियर। जो क्राइटेरियन है सिलेक्शन के लिए विभिन्न अलग अलग पदों पे विभिन्न पोस्ट, तो वो सब काफ़ी क्लियर होने चाहिए। तो क्लियर कट सिलेक्शन क्राइटेरियन, वेल डिफाइंड रोल्स विद इन द एनएससी स्ट्रक्चर। तो एनएससी के अंदर जो है स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर इंडक्ट कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बहुत सही होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट किस ढंग से होगा, इन सब चीज़ों पे काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन दो इट इज़ नॉट a statutory body established by executive order, it does not mean that we can compromise in terms of a formal structure, method, technique, process, all such things has to be made far more clear। Potential elevation of deputy NSA, clarity होनी चाहिए कि अब NSA के बाद next NSA, second line of leadership has to be trained। अजीत डोभाल हैं, हर समय अजीत डोभाल जैसे लोग हमेशा नहीं मिलेंगे वैसे, ठीक है, लेकिन वो अभी तक मतलब अच्छे लीडर्स की निशानी होती है कि वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करके जाते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि अजीत डोभाल साहब जो हैं अपने जैसे ही, अब एग्जैक्टली अब वैसे तो कोई हो नहीं सकता है, यूनिक होते हैं लोग अपने आप में सब, तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप वो तैयार करके जाएंगे, गवर्नमेंट को बता के जाएंगे इसके बाद कौन एनएसए होना चाहिए। इन सब चीज़ों को एक इम्पर्सनल सेटअप अरेंजमेंट के अंदर लाना जरूरी है टू मेक द थिंग्स फार मोर स्टेबल। क्लियर? तो ये सब जो है रिफॉर्म्स ये हम लोग कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, और रिसेंट डेवलपमेंट्स अभी क्या क्या हुए हैं ये सब होने चाहिए। और अभी क्या हो रहा है, अभी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ही एफिशिएंट इफेक्टिव है। गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए। तो रिसेंट डेवलपमेंट जो कुछ हम लोग जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड रिवैम्प्ड अभी रिसेंटली हुआ ना, अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले पहलगाम केस जो हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको रिवैम्प किया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। और आलोक जोशी जो हैं उनको बनाया ना उसका हेड, आलोक जोशी साहब को, वो आपके रिसर्च एनालिसिस विंग के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। ठीक है, देन फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जुलाई 2024।
so that NSA could focus on strategic issues. तो यहाँ जो पोस्ट थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में, तो उस पोस्ट पे लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनको एग्जिस्ट करने के लिए, जैसे एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी हम बता चुके हैं, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, इन सबको अपॉइंटमेंट हुआ है, जिससे कि NSA कुड फोकस मोर ऑन द कोर एरियाज एंड ग्रेटर फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी। ये अभी समय के हिसाब से गवर्नमेंट अभी साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और इसके लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो उनका ऑफिस क्रिएट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट में। ठीक है, ग्रेटर फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये है पूरा स्ट्रक्चर आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, हम लोग क्या किए, एकदम सिंपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मैटर्स पर एसिस्ट करने के लिए, सिक्योरिटी मैटर्स पर एडवाइस देने के लिए हमने बना दिया PMO, आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा सके, आपने बनाया PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ये 1977 से है। ठीक है, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट हुआ करता था। तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर हुए। प्राइम मिनिस्टर को एग्जिस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट था, उसको हटा करके उसकी जगह बनाया गया 77 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसको रिकमेंडेशन और एडवाइस देता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी मैटर्स पे। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जिसके अंदर आप देख ही चुके स्ट्रक्चर में सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, IB है, फिर रॉ भी है, और डिफेंस स्टाफ जो है वो सब भी हैं, CDS भी हैं, ये सब उसके अंदर। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है हेडेड बाय NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसके नीचे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, और उसके नीचे फिर सेक्रेटरीट है, और तीनों मिलकर काम करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम्स कहने का मतलब उसको और इम्प्रूव कहाँ कहाँ किया जा सकता है, और क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट। ये है पूरा सीनरियो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। और नेशनल सिक्योरिटी हमारे प्रीवियस जो लेक्चर था वो वीडियो है यूट्यूब पे, आप उस पर आप देख लेंगे, में नेशनल सिक्योरिटी पे ही डिस्कशन है। और इस बार इसमें हमने डिस्कस किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो स्ट्रक्चर भी हो गया, फंक्शंस, ये सब सारी चीजें। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि नेशनल सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। जब सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो विकास और बाकी की बात आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे हम लोग कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, तो कॉन्स्टेंटली हमें उस पर काम करना है, क्योंकि दुनिया लगातार, हम लोग जैसे जैसे इवॉल्व करते जा रहे हैं, नए नए तरह के चैलेंजेस आते जाएंगे, चाहे वो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी हो, या साइबर सिक्योरिटी हो, या फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ टेरिटरी हो। हर एरियाज में नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। सो वी नीड टू बी alert and we need to be vigilant. We have to work constantly, on our national security, on our priorities. और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप काउंसिल बना दें, बॉडी बना दें, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पूरा वो जो साइकिल है इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट का, वो सस्टेन बेसिस पे चलता रहे। आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से बना दिया वो एनफ नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, टॉप एक्सपर्ट्स, अच्छा ह्यूमन क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स लगातार उसकी सप्लाई होती रहनी चाहिए। एक सिर्फ NSA ऊपर आ गए, अजीत डोभाल साहब आ गए, वो इनफ नहीं है। ठीक है, वो इनफ नहीं है, और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए, जिससे कि और बेहतर काम वो साफ कर सके। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सरकार अगर चाहेगी, सरकार वो भी कर सकती है। जैसे आज हम लोग डिमांड करते हैं कि एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज होना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आएंगे, और जुडिशरी के अंदर फिर इंडक्शन होगा क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, उसी तरह से एक इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर सकती है। उसमें भी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए जो एप्रोप्रिएट जैसा एप्टीट्यूड चाहिए, ठीक है, वैसे एप्टीट्यूड वाले कैंडिडेट जो हैं फिर वो उसमें अपेयर करते हैं, और बेस्ट कैंडिडेट्स आप सिलेक्ट करते हैं, और एक सस्टेन बेसिस पे हर साल, ठीक है, रेगुलर आप इंडक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं अलग अलग एरियाज में। तो आपका एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। तो उसमें भी जो है आपको बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जो है कंट्री के सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो आप उनको इंडक्ट कर रहे हैं, ये जो क्वालिफिकेशंस आप तय कर देंगे, उनको 5 साल की आप ट्रेनिंग देंगे या 3 साल की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से फिर बिल्कुल वैसे ही है, वो भी कैडर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, वो टॉप आपके जो एक्सपर्ट्स होंगे सिक्योरिटी मैटर्स पे,
आप उनको अलग अलग कैडर्स के स्टेट कैडर के हिसाब से उनको आप देंगे, वो अलग अलग स्टेट में वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन सबको एग्जिस्ट करेंगे, उनको एग्जिस्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टाफ एजेंसी का प्ले कर सकते हैं। मतलब इस ढंग से नेशनल सिक्योरिटी जो है, मतलब उसको गवर्नमेंट को कई फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। अभी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा है। ओके, थैंक यू।